अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको हाइब्रिड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। व्यूवर्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर टेस्ट के लिए एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 कंप्लीट MCQs स्टार्ट कर चुका हूँ। व्यूवर्स, पार्ट 7 तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। अभी पार्ट नंबर 8, 9 कंबाइन अपलोड कर लेते हैं। व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। टेस्ट देने से पहले एक मरतबा ज़रूर इसको पढ़ लें, इंशाल्लाह आप लोगों के टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। वेयर इन एक्यूज्ड का मतलब है मुल्जिम कैन नॉट विद इन 24 आवर बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। अ टेम्परेरी ऑर्डर फॉर पुलिस नॉट एक्सीडिंग 24 आवर्स may be obtained from the viewers option B nearest magistrate। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2। सेक्शन डैश 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 ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 डील्स विद रिमांड। व्यूअर्स, रिमांड के लिए जो सेक्शन है वो ऑप्शन डी 21EE रिमांड के लिए यूज्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 3। As for section 14(2) of the Anti-Terrorism Act 1997, the federal government or provincial government to establish a court under this act shall, after consultation with dash 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 option B Chief Justice of concerned High Court। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4। Section dash 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 of the Anti-Terrorism Act 1997 deals with composition and appointment of presiding officer of anti-terrorism court। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन बी सेक्शन 14। क्वेश्चन नंबर 5। सेक्शन 13 of the Anti-Terrorism Act 1997 empowers dash 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 with establishment of anti-terrorism court। ऑप्शन सी both A and B is the correct option है, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 6। एज फॉर सब सेक्शन 2 of section 21D of the Anti-Terrorism Act 1997, all offences under the act punishable with death or imprisonment for not exceeding 3 years shall be ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, नॉन बेलेबल। व्यूअर्स, नॉन बेलेबल कहते हैं नाकाबिल ज़मानत को। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है सेक्शन डैश 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 ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 डील्स विद बेल। बेल मचलका या रकम ज़मानत जिसको कहते हैं, और इसके लिए जो सेक्शन है 21D। सेक्शन 21D डील विद बेल जो ज़मानत होती है। Question number 8. A person who commits offence under subsection 3 of section 21C shall be liable on conviction to imprisonment for term not exceeding question number 8 में ऑप्शन बी 10 years। लाइबल के लिए ये याद रखिए कि 10 years पनिशमेंट है। Question number 9. A person who commits an offence under section 21C1 shall be liable on conviction to imprisonment for a term not less than viewers question number 9 में 10 years। ये दो सेक्शन है और दोनों सेक्शन के मुताबिक लाइबल के लिए जो सज़ा है उन 10 years है। क्वेश्चन नंबर 10. Section dash dash of the Anti-Terrorism Act 1997 deals with terrorist investigation। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है 21B। टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए सेक्शन 21 अकॉर्डिंग टू एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 डील करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एज फॉर सेक्शन 21
A6 of the Anti-Terrorism Act 1997, where a person knows or has reasonable cause to suspect that a terrorist investigation is being conducted or is proposed to be conducted. A person commits an offense if he question number 11 में option C, both A and B is the correct option है. Question number 12. As per section 21A5 of the Anti-Terrorism Act 1997, an area may be designated a cordoned area. Cordoned area viewers designated का मतलब है नामजद करना या इशारे से बता देना या ज़िम्मे करना, और कॉर्डन्ड एरिया जो है घेरे में लिया हुआ इलाका इसको कहते हैं. फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ डैश 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 डेज विच मे बी एक्सटेंड इन रिटन फॉर्म टाइम टू टाइम. व्यूवर्स क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है 14. Question number 13. If a designation of cordon area is made orally, the dash 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 making it shall confirm it writing as soon as reasonably practicable. Question number 13 में option B is the correct option है officer. क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते. क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कॉर्डन एरिया मींस एन एरिया डिजिग्नेटेड अंडर डैश 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 फॉर द पर्पस ऑफ टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन. क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन डी एंटी टेररिज्म एक्ट 1997. क्वेश्चन नंबर 15 द प्रोटेक्शन ऑफ जजेस कॉन्सल्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर विटनेस एंड पर्सन कंसर्न विद द कोर्ट इज ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट. ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 16 सेक्शन डैश 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 ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 डील्स विद मोड ऑफ मेकिंग ऑफ सर्च एंड अरेस्ट्स. क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन बी 19A सेक्शन 19A. क्वेश्चन नंबर 17 सेक्शन 1910 ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 डील्स विद. क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है एब्सेंटिया. क्वेश्चन नंबर 19 वियर एनी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर. एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर का मतलब है हुक्म से नाराज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट मेड अंडर सेक्शन 21BF. इट मे विद डैश 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 डेज of such an order file a review application before the federal government. Question number 19 में option B correct option है 30 days. Question number 20 section 21B of the Anti-Terrorism Act 1997 deals with. Question number 20 में option B correct option है proscription of organization concerned in terrorism. ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं व्यूअर्स. ये MCQs इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 16 ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 डील्स विद ओथ ऑफ जज ऑफ एंटी टेररिज्म कोर्ट. इंपॉर्टेंट MCQs आप लोगों ने याद रखनी है. क्वेश्चन नंबर 2 Section 15 of the Anti-Terrorism Act 1997 deals with fleas of setting of anti-terrorism court. Question number 3 the time for complication of joint investigation is provided in section 19I of the Anti-Terrorism Act 1997 is dash 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 days. Question number 3 में हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है 30 days. क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन 21D6 ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 डील्स विद डैश डैश डैश. क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन बी प्रोटेक्टिव कस्टडी जिसको हिफाजती तहवील भी कहते हैं. Question number 5 section 21D4 of the Anti-Terrorism Act 1997 deals with. क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है
additional consideration for granting bail. Question number 6. Jurisdiction of the Anti-Terrorism Court is dealt by section dash dash of the Anti-Terrorism Act 1997. ऑप्शन बी सेक्शन 12 ये डील कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. सेक्शन 11Q of the Anti-Terrorism Act 1997 deals with forfeiture of dash 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 property. क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है. कन्विक्ट अफेंडर, सज़ा याफ्ता मुजरिम जिसको कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. सेक्शन 11M of the Anti-Terrorism Act 1997 deals with cooperation with dash dash dash. क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, पब्लिक. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है whoever commits offence under section 11J of the Anti-Terrorism Act 1997 shall be punishable on conviction with imprisonment for a term not less than. क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन ए 5 years. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते. Any person who commits offence under section 11 L shall be punishable conviction with imprisonment for a term not less than. क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, 5 years and not exceeding 10 years. क्वेश्चन नंबर 11. सेक्शन 11H of the Anti-Terrorism Act 1997 deals with. क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन बी फंड रेजिंग के लिए ये सेक्शन 11 ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट डील कर देते हैं. जो कोई भी पार्टी हो, कोई भी पर्सन हो, फंड रेजिंग अगर करते हो. सेक्शन 11G प्रोहिबिट्स फ्रॉम वियरिंग. क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, यूनिफॉर्म ऑफ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते. As per section 11E4 of the Anti-Terrorism Act 1997, any person who violates any direction or order of the federal or provincial government or any term of bond referred in subsection 2 shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to. Question number 13 important MCQs है, 3 years or with fine. ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 14. Any person whose name is notified in the list entered in the 4th schedule under subsection 1L of section 11EE by any direction or order of the federal or provincial government made under subsection 2 of section 11EE may file in appeal to. क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन बी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट. क्वेश्चन नंबर 15. सेक्शन डैश 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 ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 डील्स विद प्रोबेशन ऑन डिस्पोजल ऑफ केस प्रॉपर्टी. क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, 11 और 5E. क्वेश्चन नंबर 16. सेक्शन 11EEE of the Anti-Terrorism Act 1997 empowers dash dash to pass order of arrest. क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, द गवर्नमेंट. क्वेश्चन नंबर 17. measure to be taken against proscribed organization are dealt by section dash dash of the Anti-Terrorism Act 1997. 11E option B is the correct option. Question number 18. Section 18 of the Anti-Terrorism Act 1997 empowers dash 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 to appoint public prosecutor or additional public
prosecutors. Option C, provincial government. Question number 19. Section dash dash of the Anti-Terrorism Act 1997 deals with public prosecutor. 19 में ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है 18, सेक्शन 18. Question number 20. Section dash dash of the Anti-Terrorism Act 1997 deals with powers of anti-terrorism court with respect to other offences. ऑप्शन बी सेक्शन 17. व्यूवर्स ये MCQs इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो इंटेलिजेंस ऑफिसर का टेस्ट है. मज़ीद MCQs और मज़ीद फास्ट पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो. शुक्रिया.